The northeastern story of Chinese intrusion, rugged terrains, varied climates, struggling unique cultures and traditions of indigenous clans and communities, and separatist movements has made Arunachal Pradesh a potboiler in current political situation of the country. The Lieutenant Governor K.A.A. Raja of erstwhile NEFA in 1974 requested Sri Eknath Ranade to bring here the newly ideated Vivekananda Kendra formed in 1972 to look upon the persistent issues of the state. Eknath Ji started with 7 schools in different locations in 1977 under the name Vivekananda Kendra Vidyalay. In Arunachal Pradesh, it is a lot of demand for VKV. To start on VKV, people, whatever requirement we want, they will give. With people's love, a total of 33 secondary and senior secondary schools, both independent and partially government-aided, have been since empowering the people of the state, increasing the reach of education through ideals of Swami Vivekananda. Man-making and nation-building being the motto of Vivekananda Kendra, it is determined to uplift the morale of the otherwise neglected state of 17 districts with 1960 kilometers of international border. In focus, the southern part of Arunachal, Tirap and Longding districts sharing international border with Myanmar and state border with Nagaland, the first to serve was Ramakrishna Mission. আমাদের অরুণাচলে প্রথম আমরা আসি 1966 3 schools of Ramakrishna order since then, 1 Sharda Mission and 2 boys schools and a hospital in Itanagar, and didn't expand further because of manpower shortage. मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर जहन होगी। The erstwhile Tirap district saw the first onset of Christian missionaries in early 90s and has since a steep rise in Christianity and a dwindling count of the indigenous communities and customs. That beliefs means what was they believe? Their belief was in nature gods. Now we are no more living in the dark ages. As they grow, they learn. Religion is not only based on just superstitious beliefs, you know. Sir, you mean to say that believing in nature is superstition? No, believing in nature gods is superstitious thing. We don't believe. We know that sun is not a god. Okay. Moon is not a god. They believe in this. There is Donipolar religion. That is, they consider sun and the moon as gods. They are not gods. We know that we are living in a scientific age. The most converted community in the district is the mighty Wanchos, who has a history of fighting the British and killing many officers in the 18th century to protect their land and culture. ये ऑल वांचो चिफ्टेन अक्टूबर 5 में हम लोग का इकट्ठा होता है। सारा वांचो का जितना राजा है, अच्छा लोंगडिंग में हम लोग का अभी फिलहाल उसको हम लोग ये कोशिश कर रहा है कि उसको रजिस्टर हो पहले। ठीक है, ओके। हम एसोसिएशन का और गवर्नमेंट से रजिस्टर हो। फर्स्ट हम लोग वो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग लगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एवरी राजास ऑफ दिस वांचो विल डू समथिंग। वो अपना ये कैथोलिक बप्टिस्ट से कोई ये नहीं होगा, लेकिन हम लोग राजा टाइट हो जाएगा तो एवरी पीपल अपना हमारा सेनवा लॉन्गडिंग के आसपास है। लॉन्गडिंग से थोड़ा 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो उसमें हम लोग वांचो हैं, वांचो ट्राइब का है, एसटी है। वांचो ट्राइब में एक टैटू का एक ट्रेडिशन है, उसका बारे में थोड़ा बोलेंगे? टैटू फिलहाल वैसे आजकल के ज़माने में अभी फ़िलहाल टैटू नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग जब टैटू चलते रहेंगे तो हम लोग का सिविलाइज तो नहीं है जैसा लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या किया कि टैटू को टोटली बंद किया है।
टैटू तो बहुत दिनों का पार्ट है आपका, राइट? हाँ जी। आपका ट्रेडिशन, आपका कल्चर ये है। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि टैटूइंग करना बंद करना चाहिए? वो क्यों लगने लगा? क्योंकि खास करके इसमें ऐसे हैं, हम लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आए हैं, उसी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग जो चेंजेस के रिलीजन उसके लिए आप लोग करना बंद कर दिए? हाँ जी, उसी वजह से, क्रिश्चियन की वजह से हमारा थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आया है, थोड़ा लिविंग स्टाइल थोड़ा अलग से हुए हैं, और सारा रहन सहन या खाना पीना वगैरह एनी काइंड ऑफ जो चीज़ भी है हम लोग उसकी बात ही थोड़ा चेंज आया है। तो आपका इस गांव में जो 3000-4000 लोग हैं, सारे क्या कन्वर्टेड है? जी हाँ। VKV has one school in Nyosa up to 8th standard and also runs a girls' school under the name Kasturba Gandhi Balika Vidyalay in borough of Laju, circle for dropouts with 6 to 8 classes. Vivekananda Kendra, with the path shown by Swamiji, has undertaken child education like Balwadis and Anandalaya. Another initiative, to name a few, Arun Jyoti from 1993 has been working deeply to revive the faith and traditions of the indigenous communities who are nature worshippers and preserve their age-old cultural system of one for all and all for each. The example being an awesome process of house making in a village where all come together to build a house. Nocte Raja view on Arun Jyoti. कैंपिंग में या अरुण ज्योति का अंदर में तो वो लड़का हम देखा है कि बेस्ट एग्जाम्पल हम दे रहा है, बस्ती में भी मीटिंग सिटी में भी देते हैं। वो एक दिन कैंपिंग में गया एक बार, आने के बाद वो पूरा चेंज हो गया, उसका बिहेव मैनर सब चीज़, और अभी पढ़ने में भी ध्यान दे रहा है। अभी क्लास 10 में है, लेकिन यहाँ में जब था वो बदमाश ये था, एक नंबर था, ये बात सुनते नहीं है, बड़े क्या बोलते हैं वो भी सुनते नहीं है, वो उल्टा यही था। लेकिन डिसिप्लिन के लिए कैंप में गया तो अपने के लिए भी सोचा है वो अभी समाज के लिए भी सोचा है, जैसे कि कर रहा है, जैसे कि प्लेग्राउंड सब करना है बोलने से आगे में आ जाता है। अभी क्लास 10 में है, कुछ करना है बोलने से भी वो आगे में आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, वो बहुत चेंज हो रहा है ये स्थिति। The overall socio-economic situation of the district is not very encouraging, with dismal health care. पंक्चर है ना सर, दिस इज PHC पंक्चर, और मैं यहाँ का मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। आई एम पोस्टेड हियर फॉर लास्ट 6 years। और ये पंक्चर PHC के अंदर में यहाँ पे 2 ब्लॉक आते हैं, खाकम ब्लॉक एंड पंचाब ब्लॉक। तो खाकम ब्लॉक में 5 गांव है और पंचाब ब्लॉक में 4 गांव है। तो दिस PHC बेसिकली कवर्स अराउंड 15,000 पॉपुलेशन। 15,000 पॉपुलेशन को यहाँ पे एक ही PHC है,
और ये पीएचसी में ओनली वन डॉक्टर वन डॉक्टर नर्स एक है और बाकी है स्टाफ लोग, लेकिन क्रिटिकल मैन पावर इफ यू सी वन डॉक्टर वन नर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट एक है. देयर इज नो फार्मासिस्ट, देयर इज नो एनएम. ऐसे टाइप का कुछ कुछ प्रॉब्लम है मैन पावर का यहाँ पे. तो आप लोग गवर्नमेंट को बोले कि फॉर द ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इतना लो जो मैन पावर है फॉर दैट हैव यू अप्रोच्ड टू गवर्नमेंट? या ऑफ कोर्स बहुत बार लिखे हैं हम लोग, बहुत बार कागज हम लोग अपना प्रपोजल डाले. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, मैन पावर प्रॉब्लम हम लोग बहुत बार हाईलाइट किए हायर अथॉरिटी को भी. So has there been any steps taken by government? We are hoping and we are still hoping कुछ तो होगा इस बार. Problems of separatist movements by NSCN is a concern which the government of India should address. Our former Prime Minister of India has welcomed the chief of the NSCN and New Delhi by welcoming him, laying down red carpet in New Delhi. They are stating that the NSCN National Council of Nagaland is not a terrorist group but is a national council, a socialist council. So they were separated Greater Nagaland, covering the part of Arunachal, then the part of Assam, and they want to the part of that Burma across the international border, and they want to make it a Greater Nagaland. They want to dominate here. They are dominating here. Every people of the section of that organization are working here in a jungle. They are operating here. They are living here also. They are extracting monies. They are torturing the local people. And they used to collect taxes from each and every houses. This is the problem actually that local people are facing here. Because of this, development activities have been disrupted. So what's the government doing to prevent all those things? Government actually, they have not empowered the Indian armies and government to take lawful action against them also. There is no any order for shoot inside. They are hiding in the villages, jungles. They have so many lots of camps here. They are well established here. So has there been any such operation or any defense operation that government is planning to eradicate this problem, something like that? Government of India has permitted them to collect taxes for their own revenues. This is main one cause. Then they have not declared this organization as a terrorist group. Okay. But they are terrorizing the local people, right? They are recruiting local people. They are kidnapping the local people. They will go to local people. They are engaging monies, and then they used to engage local persons to levy young boys from each and every villages to recruit their gangs to their organization. We have Ajak Muiba groups is there. Then the Kaplan groups is there, K groups is there. Then after that there is United groups are there. Besides that there is Alphas also Assam Liberation Front. They are also here. Then many kind of this then Kuki, Bonipuri, there's Kuki militants are also operating here. Combinedly they are harassing the people, local people. Because of this we are as a district administration we are also trying hard to cooperate with the paramilitary forces. But sir, how can the government of India allow a parallel system to collect taxes? That is not possible, right? This is unofficially they are doing, not officially. So today I went on this first commandant how he was behaved very nicely. Means such a problem won't be there in school because they also want education institution should function properly. An appeal to the people of this country to come forward and build up the young joining the movement with educational uplifting to build colleges, technical education institutes, increasing computer literacy to protect the heritage of the most diverse cultural place in South Asia.